Yes, guys. Are we ready? Come on. Very good afternoon, my dear friends. Guys, good afternoon. Chalo, done with fun now. Get back to work. Back to work. Come on. So, friends, we are dealing with the topic of income from what, my dear friends? Capital gains. Yes? All of us? So, before we proceed, let's once quickly revise and we'll move forward. Tell me, guys, what is section 5? Scope of total income. As per section 5, what are the two types of income? Indian income and foreign income. What is Indian income? Income which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. We'll call it as Indian income. What is foreign income? Income which is accrued and received both outside India. If income is Indian income, what will happen? Taxable for all. If income is foreign income, taxable for ROR, RNOR only in two cases. What are two cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. दोस्तों clear है? What is section 9? Income deemed to occur as in India. Please concentrate, please focus. Reply. What is section 10.1? Agriculture income from a land in India is exempt. 10.2. Share of profit from HUF. 10.2a. Share of profit from partnership firm. 10.7. Allowances per quits paid by government of India to an Indian citizen working outside India. 10.4.2. Interest on NRE account is exempt. NRE. By mistake, don't tell NRO, it is NRE. 10.11a. Sukanya Samruddhi scheme. 10.16. Scholarship granted to meet cost of education. 10.17. Daily allowance or constituency allowance to MPs or MLAs. 10.17a. Awards and rewards given by central government or state government. 10.18. Pension and family pension to gallantry award winners. Gallantry award में क्या covered है बेटा? So far only 3 are covered. Mahavir Chakra, Paramvir Chakra, Veer Chakra. Good. 10.19. Family pension to other armed forces. 10.26 AAA. Sikkim is individual. What is the exemption? Income from any source in the state of Sikkim, dividend or interest on security from anywhere in India. Clear na beta? Everyone. Good. What is section 22? 23.1. Let out. What is the starting point? GAV. Less what? Municipal taxes paid by owner. Balance what we get? Less what? 24A and 24B. Balance what we get is income from. Wonderful. 23.2. 23.1 is let out, you told. 23.2 also let out. Self-occupied. If a company has 3 self-occupied houses, how many we can treat as let out? Self-occupied. See that some of them nonsense. Company का self-occupied हो ही नहीं सकता है. That concept is only for individual and HUF. If you have got more than 2, what will happen? Only 2 are considered as self-occupied. Others are deemed to be let out. Correct? No? 24A. 24B. Interest amount after 25. A. Interest payable outside India is not allowed as deduction if TDS is not done. And there is no person in India who may be regarded as an agent. दोस्तों पढ़ा है मैंने ये सब. 25A. Recovery of unrealized rent and arrears of rent. 26. 27. How many points are there in team donor? 5. Quick, come on. Transfer of property to spouse or minor child other than minor married daughter. 2 exceptions. Adequate consideration. Agreement to live apart. Second, holder of importable estate. Property held by member of society, company, AOP, BOI. Next, power of attorney transaction. Last one, lease for at least 12 years. But it does not cover 2 cases. Month on month lease. Lease for less than 1 year. सर नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बोलो मैं स्टार्ट कर लूँगा कैपिटल गेन. थोड़े लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, बस देख रहे मेरा चेहरा. क्या जिंदगी है, जेंड हो गया मेरा. ठीक है यार, सबका लाइफ जेंड ही है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, बस उतना ही है. बट एंजॉय दैट जेंड ऑल्सो, दैट इज इंपॉर्टेंट. नो आई नो यू गाइस आर वर्किंग हार्ड. सम आर राइटिंग 1 ग्रुप, सम आर राइटिंग 2 ग्रुप्स. ट्रेमेंडस प्रेशर, नो टाइम, खत्म ही नहीं हो रहा है. कितना भी पढ़ो, माउंटेन है, कितना भी पढ़ो खत्म नहीं हो रहा है.
बराबर है, फैक्ट। खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तो मतलब कुछ काम कर रहे हैं आप, खत्म हो गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सच्ची बोल रहा हूँ, कैसे कैसे खत्म हो सकता है यार, इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? इट टेक्स टाइम नो, इफ यू आर डूइंग इट एंड इट्स टेकिंग टाइम, गुड, इट्स अ पॉजिटिव साइन, टेक इट पॉजिटिवली, डू इट बॉस। जितना मेहनत कर सको उतना भारी मेहनत करो, डू योर बेस्ट एफर्ट, डोंट टेक मेंटल प्रेशर बट, बिकॉज मेंटल प्रेशर शुड नॉट स्पॉइल योर फिजिकल हेल्थ। ये फिजिकल हेल्थ गेट स्पॉइल्ड, अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना, एग्जाम के बाद बीमार पड़ जाओ, 10 दिन आराम करो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी नहीं कर सकते हो, अब एवरी डे इज काउंटिंग, क्लियर नो, एवरी आवर इज काउंटिंग, नो डाउट अबाउट इट। क्या बोल रहे? नहीं, एवरी मिनट तो टू मच हो गया, every hour is counting, there is no doubt about it, so you have to put your best effort. So if things are not moving forward, that's okay man, that's very common. सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने डूइंग माई सी एंटर सी ए फाइनल, खत्म ही नहीं हो रहा सिलेबस। अरे कॉस्टिंग पढ़े तो डी याद आ रहा है, डी पढ़े तो आई याद आ रहा है, आई पढ़े तो कंपनी एक्ट याद आ रहा है, कंपनी से पढ़े तो नेगोशिएशन एक्ट आते हैं, नेगोशिएशन पढ़े तो ऑडिटिंग आता है, ऑडिटिंग पढ़ाई करे तो अकाउंट का कुछ याद आ रहा है, अकाउंटिंग करे तो एएस आ रहा है, एएस पढ़े तो एस से याद आ रहा है। बराबर है ना, दैट्स अ फैक्ट, nothing can be done. You have to accept it and live with it and work for it. But don't take mental pressure. Work for it. Difficult. Sir, one thing is there, sir. You have chosen an extraordinary course. You have chosen an extraordinary course. If you would want comfort in life, you would have chosen BCom. You decided that you will struggle. You decided that you will slog. You decided that you will spoil your life for some years. So that balance years will be more fantastic. Correct? No. CA course is not difficult course. It is a course only for difficult people. It's not tough course. Course is for tough people. You have to be tough to accept it. That's a challenge. Correct? No? Tough मतलब मसल बढ़ा के नहीं, दिमाग बढ़ा के, वो प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना? तो जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा जवाब दो, डोंट सिट लाइक दैट, मतलब मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता आप लोग रिप्लाई नहीं दिया तो। सेक्शन 60, transfer of income without transfer of asset 61, revocable transfer of asset 62, irrevocable transfer of asset 64.1.1, 64.1.2, remuneration of spouse from a concern in which other spouse has substantial interest. Will club in the hands of that spouse who has got substantial interest. Good. 64.1.3 क्या है बेटा? 4 क्या है बेटा? Transfer of asset to spouse. Correct, no? Everybody. Pakka. I'll ask one question. Shiva Teja gifted a property to my wife. That property she sold. On that property, capital gain is coming. Who has to pay capital gains tax? Shiva Teja. Is it because of 27 or is it because of 64.14? सोच के बोलो. House property I gave which she sold. Wonderful. 64.14. 27 will come only for a rental income. तू बोला पर कॉन्फिडेंस नहीं था आंसर में. 6. Transfer of asset to son's wife. 7. Benefit of spouse. 8. 64.1a. Clubbing of income of minor child. What are the two cases where clubbing will not apply? Skill, talent, manual work. Second, minor is suffering from disability under section 80U. In these two cases, clubbing will not apply. In other case, clubbing will apply. Will club in the hands of that parent whose income is higher, and that parent will get exemption of amount clubbed or 1,500, whichever is lower. Dosto, everybody, good. 64.2. Wonderful. Sell fucked property to HUF. Whatever income is coming, member is only taxable but not HUF. 65. Recovery of tax. Officer can recover from the actual earner but not from both. Supreme Court ruling case law. Keshav ji, Morarji, what is that? Clubbing provisions will apply even in case of cross transfers. Dosto, everybody clear with this point? Good. Tell me guys next. Can we set off business loss? सोच के बोलना. Can we set off business loss with capital gain? Hey. Yes. क्या प्रॉब्लम है?
तो ये बोलते नो 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 बोल रहा क्या? Business loss with capital gain is okay, no? Next, capital loss with business income. Business loss with lottery income. House property loss, how many years? 2 years. ये 2 years वाला क्या है रे? कुछ भी बोल रहे यार. Come on guys, house property loss, how many years we can carry forward? 8 years. Unabsorbed depreciation. Indefinite, nahi? Indefinite. Speculation loss. Speculation. Specified business loss. Long-term capital loss. Long-term. Short-term. Can we set off long-term loss with short-term gain? Short-term loss with long-term gain. HP loss with salary. Maximum 2 lakhs. Correct, no? Can we set off unabsorbed depreciation with salary? No. It's as good as business loss. You can set off with anything except salary. Barabar hai na? If a loss is coming because of depreciation, we call it as unabsorbed depreciation, which we can carry forward for indefinite period and set off against any head of income except salary. सबको clear है यहाँ तक? पक्का my dear friends? चलो, I will take 5 more minutes time for revision. Then I'll get back. 5627B. Only to a company in which public are not substantially interested. Section apply when issue price is more than face value. Taxability is on difference between issue price and fair market value. If issue price is more than fair market value. 5628. Interest on compensation, interest on enhanced compensation. Tax in the year of receipt. After reducing standard action at the rate of 50%. Yes. अरे बराबर है ना बेटा? क्या हुआ साक्षी? 5629. Advance money forfeited on or after 1/4/2014 is directly taxed under income from other sources. 56 to 10. How many categories are there? 5. Second category is what? Movable property received without consideration. What are all covered in movable property? Shares and securities, jewelry, drawings, paintings, sculptures, archaeological collections, work of art, and bullion. So if we get a car as gift, not taxable. Bike, gold watch. Yes. Gold watch from relative. Not taxable. Gold watch from non-relative on the occasion of marriage anniversary. Gold watch received from non-relative on the occasion of engagement. They will not play that way in the exam, but it should be marriage. Clear now, everybody? Speak out. 194 IA. TDS is the rate of 1%. When you're buying property more than 50 lakh, TDS is the rate of 1% on. क्या आधा आंसर बोल रहा है अभी यार? Hey, what is fair market value? Nonsense. Never use the word fair market value. Sale consideration or stamp duty value, whichever is higher. For land and building, never use the word market value. बहुत गलत स्टेटमेंट है वो. नॉर्मल केस में यूज करो मार्केट वैल्यू. इन लैंड एंड बिल्डिंग यू शुड नेवर एवर यूज मार्केट वैल्यू. इट इज ऑलवेज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. क्लियर है ना बेटा? प्लीज 50C. If selling price is less than stamp duty is deemed to be selling price. 10% variation याद है ना? What is 43CA? Same story. If it is capital asset, 50C will come. If it is stock in trade, 43CA will come. 43CA is in PGBP, 50C is in capital gains. Unquoted shares is 50CA. इसलिए रिवाइज कर रहा हूं भाई. क्लियर है ना? क्या हुआ दोस्त भाई? If Shiva Teja is having a building and I am selling building, 50C will come into picture. ठीक है?
Legend builders for whom the building is a stock in trade. If they sell, 43 CA will come. Concept to same. Selling price less than stamp duty value, stamp duty is deemed to be selling price, provided it's more than 110%. बराबर है ना? But assessee can request AO to refer to VO. AO to refer to AO. VO. VO told less. Good. Less value. VO told more. Stamp duty value. So clear no? Everybody? Next. 50D. If selling price is not ascertainable, fair market value is deemed to be selling price. दोस्तों याद है ना बेटा? पक्का clear. What are those losses which we can carry forward even if return is filed after the due date? HP loss and unabsorbed depreciation. What is section 139(1)? Due date to file return of income. बोलो due date क्या है? 31st October in three cases. Three cases क्या है? Companies other than companies subject to tax audit. Partner of the firm if the firm is subject to tax audit. Any other case 31st July. Practically there is something called 30th November also for assessees covered under transfer pricing cases, but that's not there in your syllabus. ठीक है ना बेटा? Done. 234A. In case of delay in filing of return of income, interest rate is 1% per month or part thereof. हो गया? पढ़ा है मैंने? तब नहीं, अभी भी पढ़ाया. 234B. B क्या है? नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. That means the rate less than 90% of tax payable. Then interest will apply, no? दोस्तों, everybody clear with this? 234C. Deferment of advance tax. What are the percentages? 15, 45, 75, 100. Minimum payable 12, 36. Nil nil नहीं, dash dash. Nil मतलब zero हो जाता. 75 only. Correct, no? Interest rate 3 months, 3 months, 3 months, 1 month. बराबर है ना बेटा? सबको क्लियर है सब? हो गया वो चैप्टर? एडवांस टैक्स इंटरेस्ट हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया, क्लबिंग हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बेसिक्स हो गया, स्टेटस हो गया, and we are in the middle of capital gains. Are we clear? Before I proceed to capital gains, I'll give you one question. Please solve. From the following details, from the following details, determine interest payable under section 234B and 234C. Sir, right now. Total income is 8,70,000. Total income is 8,70,000, 70,000 of Mr. A. Of Mr. A, age 32. Of Mr. A, age 32. Full stop. He did not pay any advance tax. He did not pay any advance tax
in 22-23. He did not pay any advance tax in 22-23. Full stop. He wishes to pay the entire amount. He wishes to pay the entire amount in July 23. In July 2023. क्लियर ना बेटा? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? That's it. Calculate. A by 23-24 of course. पर्सनल का में तो क्या फर्क पड़ता? That is only for PGB for the first time no. तो क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं, तो तब तो नॉर्मल में जाएंगे ना. Two minutes. I want the answer. प्रॉब्लम सॉल्व करें ना. समझ में आया क्या? क्वेश्चन दिए तो कैसा रहता? उसके लिए दिया. ऑनलाइन निकालो आंसर.
अच्छा है ना? वो इतना भी डेंजर क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। हो गया? बोल आंसर बोल। क्या? इंटरेस्ट? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? 234 बी का सी का इंटरेस्ट पूछा। तू इंटरेस्ट का फिगर बोल रहा है क्या? अरे इनकम 8 लाख है तो इंटरेस्ट 1.5 लाख आया क्या? कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे भाई इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते टैक्स पे कैलकुलेट करते, इनकम पे नहीं। नो रिएक्शन। ओह शिट। हाँ, कोई ऑनलाइन में जवाब दे रहा है। 234 बी 3114। देखते बेटा, चेक करेंगे। somebody said 234 b is 899। चेक करते बेटा, चेक करेंगे, डोंट वरी। फोर बी। ठीक है सर, चेक करेंगे क्या? चलो गाइस, व्हाट इज द इनकम आई हैव गिवन? Can you please tell me when income is 8,70,000, what is the tax including cess? 89. Now tell me what will be section 234B interest? First of all, what is tax payable? 89. ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क को आया. How much is 90% of tax payable beta? 85,960. 80,964. Now tell me guys, what is the advance tax paid beta? तो इंटरेस्ट आएगा ना बेटा. So section 234B interest will be equal to 89,960 into 1% into 4 months. April, May, June, July. 1st April onwards interest will start. Obviously. Very good. Bolo answer. Wait a second. Small change. 85, 89, 900 into 1% into 4 months. याद है बेटा? दोस्तों, rounding off rule 119 A 35. That is the answer. Online गड़बड़ कर दिए. 234B is 3596. Anyone here got answer? Good. Very good, Aryan. दिव्या जी, डिवाइड बाय 12 कर दिए. अच्छा, यू थॉट 1% पर एनम. वाओ, लवली. अच्छा, आप भी ऐसे ही करें क्या? हम साथ साथ है. क्वेश्चन क्यों दिया समझ में आया?
Sir, are we clear with this? How do we calculate 234C interest beta? What is the best way to present? What are the columns we'll take? Due date, payable, minimum payable, paid, difference, interest. अच्छा 234C करे नहीं अपन. 15 June. How much is payable? 15%. How much is 15%? 13,494. What is minimum payable? 12%. How much is that? 10,795. What is paid? 0. Difference 13,494. Interest 13,400 into 1% into 3 months. Paid wala column. You can go ahead, but better to present. No, always good to present. Always good to present. Yeah, कितना ही है? Fantastic. $402. ऐसे आता है वो, बड़े बड़े कैलकुलेटर्स में ऐसे आते हैं. मतलब कोल्हापुर में ऐसे आते हैं बेटा. नेक्स्ट 15th September. बोलो. 46. 40,482. बोलो. यार क्विकली बोलो यार. 32 38. अंजलि. paid 0. Difference. Interest 40,000 into 1% into 3 months. कितना है? 15 December. How much is that? Waiting for others to tell. No confidence on the answer only. What is the interest? 67,400 into 1% into 3 months. ऐसे है क्या? Next 15th. $89,900 into 1% into 1 month. इसको भी कैलकुलेट होना क्या? फोर फाइव. गुड. ऑनलाइन में आंसर आ गया बराबर. वेरी गुड गाइस. हाँ, आपका तो मैं बोलने के बाद आया. गुड. सर समझ में आया क्या बेटा? दोस्तों, understood why suddenly I flashed out one question like this? Required, no? Sometimes. Abhi, clear? Done. Back to work. Tell me guys, what is section 45(1)? Chargeable section for capital gains. How many conditions are there? What are 3 conditions? There must be a capital asset. It must be transferred. There is a gain or loss on account of such transfer. Which section defines capital asset? 214. Property of any kind, movable or immovable, tangible or intangible, whether on a current business or profession, but does not include personal effects, stock in trade, rural agricultural land, specified gold bonds, gold monetization scheme. दोस्तों, what is section 48?
कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में फर्क क्या है बेटा? Indexation, and also there's a difference in tax rates. Correct? No, friends. Chalo, guys. If it's a long term, we'll take indexation. What are the cases where indexation is not allowed even though it is long term? Bonds and debentures, except capital index bonds given by the government, sovereign gold bonds given by RBI. These two cases indexation is allowed even though they are bonds. If not, for bonds and debentures, there is no question of indexation. समझ में आ रहा है बेटा? सबको क्लियर है यहाँ तक? What is the story of Srimati? What is the story? If somebody is asking you, how will you explain this? Cost to previous owner is 49.1. मंजू क्या बोल रही है? Cost to previous owner. If somebody is asking you Manjula Jasha ruling, simple line, what is the concept is that indexation can be claimed from the year in which previous owner acquired the asset. So getting clarity? Indexation can be claimed from the year in which previous owner acquired the asset. समझ में आ रहा क्या? Everybody, sir? All of us please reply. Good. I have a question. Think properly and tell. Mr. X purchased shares of Reliance Industries Limited. Okay? Reliance Industries Limited on 10/10/2021 at 400 per share. 1000 shares. How much is 1000 shares into 400? 40 lakhs. Oh my God. 4 lakhs. He sold the same on 11/11/22 at 900 per share. ठीक है ना बेटा? He does not have any other income. ठीक है? Determine tax payable. Assuming age is 59. 2 minutes. Yes, guys. What is the tax payable? 15,600. ठीक है. Next. Don't ask me any question.
इंडेक्स नंबर चाहिए ना, ठीक है। अभी थोड़ा इंडेक्स नंबर बोलना उसको, इंडेक्स नंबर चाहिए उसको। कौन से साल का चाहिए भैया तेरे को? तेरे को कौन से साल का चाहिए? कुछ भी नॉनसेंस बात करता है। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ इक्विटी एसटीटी पेड कवर्ड इन 112 ए, उसमें इंडेक्सेशन आता ही नहीं है। भाई वी शुड नो समटाइम्स व्हाट टू आस्क व्हाट नॉट टू आस्क। बोलो। हाँ 83 200। ओ माय गॉड सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, बोलो मुझे। फिफ्टीन 600 अभी गलत है सर। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? आप लोग नहीं बोल रहे आंसर, मैं समझ गया। सेलिंग प्राइस बोलो। 83,000। अच्छा बेटा सेलिंग प्राइस बोलो बेटा। यार जवाब ही नहीं देते यार आप लोग। व्हाट इज द कॉस्ट? 4 मतलब 4 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 5 लाख। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। बोलो। क्या पागल हो गए यार। 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 2.5 लाख। अरे क्या बोल रहे यार आप लोग, डायलॉग माइनस करेंगे ना, क्यों? इंटू 10% कितना है? 22,500 15,000। एच कितना? 600। 15,600। दैट इज द फाइनल आंसर। गुड। समझ में आ रहा है क्या? और बड़े लोग क्या बोलते हैं, सर आप ना रिबेट भूल गए इसे। रे already I taught you very clearly, rebate under 87A will not come to long term covered under 112A। बाकी आ सकता है पर 112A को नहीं आ सकता है। ये ऑलरेडी पढ़ा है मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको। 112 को आ सकता है, 112A को नहीं आ सकता है। समझ टेलिंग सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर किधर है फिर? अब भी लग रहा है सर सिंपल। क्या हुआ? अब समझ में आया? कोई डाउट है? कैन वी प्रोसीड? सो व्हाट इज सेक्शन 45(1)? 4 बड़े सेक्शन फॉर कैपिटल गेन्स, समझ में आया ना? अच्छा 112A में क्या? अरे यार आप पे क्या रेट पे कर रहे हैं? 10%। 10% पे करके उसमें इंडेक्सेशन भी चाहिए क्या? अच्छा आदि पता चला, ठीक है गुड। सर क्लियर है? हाँ भाई साहब थोड़ा, ठीक है ना, इग्नोर। सर क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यार दोस्तों बोलो ना यार। 45(1) 4 बड़े सेक्शन फॉर कैपिटल गेन्स, करेक्ट? नो आई नो, एक्सपेक्टेड। क्या बोले? हाँ होता है वैसे ही फिर। मिस्टर एक्स purchased a land on 6/6/2020 for 15 lakhs. He constructed building on 6/6/21
for 25 lakhs. The said house property is sold on 10/10/22 for 50 lakhs. Determine capital gains. Student is telling, सर इतना ही है क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा इंडेक्स नंबर बता अभी, इंडेक्स नंबर प्लीज. 2021 का कितना है? 301. 21-22 का 317 या 22-23 का 331. याद है ना बेटा? चलो करो. Determine capital gains and also tax rate. I didn't ask tax, I only asked the tax rate. ठीक है ना बेटा? हो गया बेटा? Last 1 minute. Good. That's called revision. This is called revision batch. Brilliant. मजा आ रहा है. What साक्षी जी? ऑनलाइन में अलग अलग आंसर आ रहे इधर. 740088. वो भी एक आंसर है इधर. आपका आंसर वही है क्या? ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता. चलो गाइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? आई मीन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 lakhs लेस एक्सपेंस कुछ है क्या? nil. Net sale consideration less cost of acquisition. Index cost of acquisition कितना है बेटा? 15 lakhs into 331 divided by
हाँ 301 कितना है 16 lakhs 502 16,49,502 is the index cost of acquisition. Correct, no? And on the constructed building also कितना है 25 lakhs into 331 divided by 317 26 lakhs 10,410 अच्छा करे बहुत अच्छा करे which is ridiculous nonsense atrocious and bullshit. What I'll take is only 25 lakhs because understand that building is short term, land is long term, whereas building is short term. So you have to understand that in case of land and building, we have to clearly check whether both are long term or not. Because there could be scenario where land is long term, building is short term. It's not improvement, इसलिए मैं building लिखा. Improvement का word use नहीं किया मैं, सोच के लिखा. Friends, balance 850 exactly. इसमें long term भी है, short term भी है. I cannot bifurcate because I don't know out of 50 lakh how much is for land, how much is for building. Actually exam में एक बार question आया था ऐसा. सुनो. In exam, one time question has come like this. But in exam, what they gave, which I didn't give now, is that in exam the 50 lakh, they clearly told for land it is 20 lakh, building it is 30 lakh. नहीं रिवर्स कुछ था, लैंड का 30, बिल्डिंग का 20. तो क्या करे, इधर 25 सेट ऑफ करे तो 5 लाख शॉर्ट टर्म लॉस आया, ऐसे ही था कुछ. इधर लॉन्ग टर्म गेन आके बैठा था, ये दोनों को सेट ऑफ कर सकते. I didn't do that only because in this question I didn't tell how much is for land, how much is for building. समझे क्या? और अपना अपना टैक्स रेट के हिसाब से चलेंगे. शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल रेट्स, लॉन्ग टर्म में तो 20%. 112 112. 25 lakhs तो कॉस्ट है मेरे भाई. शॉर्ट टर्म का स्लैब रेट लॉन्ग टर्म का 20% है ना भाई, इस पे दोनों भी है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट लिख के छोड़ देने का. फॉर लॉन्ग टर्म गेन 20%, शॉर्ट टर्म स्लैब रेट, दैट्स ऑल, सिंस द इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट. करेक्ट है ना? बट एग्जाम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. एग्जाम में वो खुद बताएंगे कि 50 लाख में लैंड का कितना है, बिल्डिंग का कितना है. मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि बताऊंगा तो आप अपने आप स्टार्टिंग में सेपरेट करते. स्टार्टिंग में सेपरेट इसलिए करते क्योंकि फिगर सेपरेट दिए. आप ये सोच के नहीं करते कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. पता है मुझे, उसके लिए क्वेश्चन दिया. हाँ बट सर क्लियर दिस पॉइंट एवरीबॉडी, स्पीक आउट. चलो नाउ लिसन, it's time to discuss some interesting points in capital gain, some special cases, so that we get good clarity of thought. Are we ready, everyone? All of us? Pakka? Can we move forward? Totally, guys. Let's proceed. सुन लो बेटा. Sir, Mr. X sold a house property. ठीक है? Which is long term. Imagine full value of consideration is 1 crore. Expenses are 1 lakh. Net sale consideration 99 lakh. Index cost of acquisition 30 lakh. Index cost of improvement 9 lakhs. Balance 60 lakh. Is my long term capital gain? दोस्तों बराबर है ना? On 60 lakhs you have to pay taxes or no? But law is telling use this money and invest in another residential house. Invest in what, sir? I'll give you exemption under section 54. So condition number 1, 54 applies only to individual or HUF. Don't write, I'll give a summary.
only to individual or HUF. What is sold is a long-term residential house, and what you have to invest is in another residential house. Either you buy or you construct. If you buy, we'll give time limit of 1 year before, 2 years after the date of transfer. If you construct within 3 years, good. दिमाग में कुछ तो है. Within 3 years after date of transfer, enjoy the exemption. Correct, my dear friends? So in this example, let us say, out of using the 60 lakh, he purchased a property for 70 lakh. He purchased a property for, then law is giving exemption under section what beta? 54. कितना है? Balance taxable कितना है बेटा? 0. But what law is telling is that this new property what you purchased, you should not sell within 3 years. If you sell, what will happen? Reverse matlab normal reverse nahi. Listen carefully. Imagine sold in 6 months. Sold in, assume for a second, selling price is 80 lakh. What is the cost? What value we purchased, boss? What value we purchased? 70 lakhs. Correct, no? But law is telling from 70 lakh reduce 60 lakh and take it as 10 lakh. 70 lakh will become short-term capital gain. 6 months only, no? Short-term only, no? So indirectly what I'm trying to tell you is that, listen carefully, if the new property what you purchased is sold within a period of 3 years, exemption what you have taken is reduced from cost on subsequent sale. Clear, no? Which section all this? Section 54 exemption. I repeat once again. Section 54 is applicable to individual and HUF. Now let me write the point. Just listen carefully first. Then we can write. I'll complete 2 sections first. 54 and 54F. ठीक है, दोनों almost same है, इसलिए दोनों साथ में कर लेते हैं. ठीक है, बाद में बाकी 2 कर लेते हैं. Come on. 54. It's applicable to whom? Individual and HUF. What is sold is long-term residential house property. ठीक है ना? And investment is again made in residential house property. So I have a question. Think properly and tell. Just answer to the point what I'm asking. I sold commercial, purchased residential. Will 54 come? Sold residential, purchased commercial. 54 come. Sold commercial, purchased commercial. 54 will come. दूसरा सेक्शन आ सकता है, बट ये तो नहीं आएगा. दूसरा आ सकता नहीं आ सकता, वो देखते बाद में. Speak out. Guys, getting clarity everybody? So if Shiva Teja sold one house and I purchased one classroom, can I take 54 exemption? Sold a classroom, purchased a house. 54 is not possible. दूसरा possible है, but 54 possible नहीं है. समझ में आ रहा है ना बेटा? Good. Then, time limit. 1 year before, 2 years after. In case of acquisition. And in case of construction, within 3 years. Friends, getting clarity? And what is the exemption we'll get? Amount invested or capital gain, whichever is lower. Obviously here you cannot take more than capital gain. That means what I want to tell you is that loss cannot come in capital gain because of exemption. Wow, I'll repeat that again. Listen, loss cannot come in capital gain because of exemption. Exemption की वजह से loss नहीं आ सकता है. पक्का clear है सबको? Everybody sir? Special point. Exemption is allowed only for investment in one residential house in India. You have to buy the property in India only, that you have to buy only one house. But they told if the capital gain does not exceed 2 crores, then 2 houses is allowed. दिख रहा है क्या बेटा वो? Yeah. If capital gain does not exceed what beta? 2 crores. Then what is the story? 2 houses is allowed. That means what I'm telling, if capital gain is 1.8 crores, अपने को एक ही घर लेना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है. 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी, 80 लाख का एक प्रॉपर्टी ले लो बॉस, दोनों का एक्सेप्शन देंगे. But this benefit will come
only when the capital gain does not exceed 2 crores, and this is only once in a lifetime benefit. याद है क्या दी? Good. This is only once in lifetime benefits. Are you getting clarity? Everybody, sir? That's all. That's the end of section 54. बहुत ही सिंपल है, बट एक खतरनाक पॉइंट है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सर, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम? 3 cases. Companies, other than company subject to tax audit, partner of the firm is subject to tax audit. Any other case? याद है ना बेटा ये सब? पक्का क्लियर है? Now listen. Sir, Shiva Teja during financial year 22-23, ठीक है ना? And Shiva Teja is a tax audit assessee. Shiva Teja is what assessee? इसका मतलब क्या है? For Shiva Teja, what is the due date to file return of income? यार बोलना बेटा. 31st October 2023. ठीक है ना बेटा? Now what has happened is, on 10/10/22, I sold long-term residential house property, and my intention is I will buy one more residential house. मुझे टैक्स भरना पड़ेगा क्या? अगर पूरा का पूरा कैपिटल गेन यूज करें तो जरूरत नहीं है. तो मुझे टाइम कब से कब तक है? इधर से लेके आई हैव गॉट टाइम टिल 9/10/24. yes or no sir? I've got time limit of 2 years to buy the property, no? If I talk about construction, I have time till 9/10/25. Yes or no? That means I have a time till 9/10/24 to buy the property. And if I say I want to construct, I have time till 9/10/25. Because ultimately time limit is 2 years in case of acquisition, 3 years in case of construction. And you can buy within 1 year before also. Don't ask me out 1 year पहले कैसा खरीद सकते हो, पैसे किधर से आएंगे? वो तेरा प्रॉब्लम है रे भाई. तेरे कुछ प्रॉपर्टी अच्छा लगा, तू खरीद लिया, उसके बाद ये बिक गया, वो भी हो सकता है ना. सो डोंट आस्क मी आउट पैसे किधर से आएंगे. है तो कर, नहीं तो मत कर. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू बाई वन मोर प्रॉपर्टी. ये बिका नहीं अभी तक, पर दूसरा प्रॉपर्टी अच्छा मिल गया, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो फंड्स अरेंज करके वो खरीद लूंगा, उसके बाद इसको बेचूंगा, फिर भी एग्जाम्पशन आएगा ना. प्रोवाइडेड दैट परचेज इज विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर. गाइस, डन. लिसन नाउ. So I actually have time till 9/10/24. But what is the due date of return of income? Law is telling, कुछ याद आ रहा क्या? If amount is not utilized before due date of return of income. I repeat again. What is that line, sir? If amount is not utilized when? Before due date of return of income, then such amount should be invested in CGDS account, capital gains deposit scheme account. Law is not asking you to pay tax. Law is telling, भैया तेरे पास 9/10 टाइम है, we are accepting that point, but we want you to put the money in CGDS account, and before that date use it. Once you put the money in CGDS, we'll keep watching you till 9/10/24. Utilized, very good. Not utilized, pay tax. Getting clarity, everybody? You might ask, sir, why this concept has brought in the law? Logic is simple. आप बोल रहे 1924 तक टाइम है, 2 साल के अंदर खरीद लेंगे, करेक्ट है ना? अब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे. रिटर्न ऑफ इनकम में जो प्रॉपर्टी सेल हो गया उसको दिखाना पड़ेगा ना. अब तुम टैक्स भरोगे नहीं भरोगे? रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल करोगे, यू विल डिस्क्लोज द प्रॉपर्टी व्हाट यू सोल्ड, नो? सो दैट मींस कैपिटल गेन्स टैक्स विल कम, नो? आप क्या बोल रहे हैं? मैं टैक्स पे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी का रिचर्स खरीदना है. गारंटी क्या तू खरीदेगा? एसएससी बोल रहा है गारंटी क्या मैं नहीं खरीदूंगा. मैं बोल रहा भाई तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए, तू तेरे पास ही रख, बट तेरे जेब में मत रख. सीजीडीएस अकाउंट ओपन कर, उसमें डिपॉजिट कर और एग्जम्पशन ले, और मैं तेरे को देखते रहूंगा 9/10/24 तक. उसके अंदर तू खरीद लिया, ही स्माइल करूंगा, जाऊंगा. नहीं लिया भाई, बढ़ दे टैक्स. समझ में आ रहा है ना बेटा? आई एम श्योर वी गॉट द इंटेंशन बिहाइंड CGDS अकाउंट. एवरीबॉडी सर,
You might ask one question, sir, what if 31st अक्टूबर से पहले ही प्रॉपर्टी परचेस कर लिया तो? अच्छी बात है ना यार, क्यों आएगा CGDS का कॉन्सेप्ट? CGDS का लॉजिक कब आएगा? If the amount is not utilized before due date of return of income, then only this concept of CGDS will come into picture. If it's already utilized, then there is no concept of CGDS. Beta, please reply karo beta. Everybody getting clarity? Come on, when will the concept of CGDS apply? Only when the amount is not utilized before due date of return of income. That's it. Do you want to take this? अच्छा, एक काम करेंगे, ये भी खत्म करेंगे, फिर लिख लो आप. सर सुन लो ना एक सेकंड, डोंट राइट, 2 minutes. 54F, सेम स्टोरी. Individual HUF sold any long-term capital asset other than residential house property, means commercial also is okay. Investment is made in residential house property. Time limit is 1 before, 2 after, and construction 3 after. Same story. समझ में आ रहा ना बेटा? Time limits तो same है ना बेटा? Now I'll ask you one question. If I sell residential, buy commercial, exemption will come under which section? और कोई भी सेक्शन नहीं है तो आएगा क्या? नहीं. सोल्ड रेजिडेंशियल, परचेज कमर्शियल, नहीं आएगा. वही तो पूछा वापस मैंने, आंसर चेंज क्यों कर रहे? क्वेश्चन सेम है तो. सोल्ड कमर्शियल, परचेज रेजिडेंशियल, 54F. सोल्ड कमर्शियल, परचेज कमर्शियल, कुछ भी नहीं आता. सोल्ड रेजिडेंशियल, परचेज रेजिडेंशियल. सोल्ड नेकलेस, डायमंड नेकलेस एंड परचेज हाउस, 54F. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? लॉन्ग टर्म में तो आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो नहीं आएगा. अब नेकलेस को लॉन्ग टर्म कब बोलेंगे आप? वंडरफुल, 36 months. एनी अदर एसेट 12 months में क्या क्या है? लिस्टेड शेयर्स. क्या है शेयर्स? रॉन्ग आंसर. लिस्टेड सिक्योरिटीज. दोनों में बहुत फर्क है भाई. सेकंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ UTI, जीरो कूपन बॉन्ड्स. सेकंड वाले में शेयर्स है. 24 months में क्या है? अनलिस्टेड शेयर्स. लास्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे फेमस. दोस्तों क्लियर है ना? डन. व्हाट इज एग्जम्पशन? ये थोड़ा सा अलग है. एग्जम्पशन के लिए थोड़ा सा टाइम पास है इसमें. एग्जम्पशन इज अमाउंट इन्वेस्टेड into long-term capital gain divided by net sale consideration. Come on guys, what is the formula? I repeat again, what is the formula to claim the exemption? Amount invested into long-term capital gain divided by net sale consideration. Do we have a formula in 54? Do we have a formula 54F? इसके पीछे लॉजिक क्या है बोलूं? One line answer, which I'll tell in logical terms. The whole idea in 54F is that 54F full exemption will come when you invest full net sale consideration. Correct, no? When you invest full net sale consideration, full exemption will come. अरे दोनों सेम होके कैंसिल हो जाएगा ना यार. Correct, no? Government idea is in 54 invest capital gain. That is enough. But in 54F we want you to invest entire net sale consideration. समझ में आ रहा है बेटा? Special point, investment only in one residential house in India. और ये वाला पॉइंट तो नहीं है 2 करोड़ 2 घर, वो सब नहीं है. वो सिर्फ किसमें है? वो भी वंस इन 54F में एक और स्पेशल पॉइंट है. Assessee, what is that word, sir? Assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. मतलब जिस दिन जो long term capital asset बेचे, you should not have more than one. Indirectly they are telling that what house you are buying now
can be your second house, or what house you are buying now can be your first house, but it can't be your third house. If it is third, that means already you have two, no? If you have two, you can't take exemption. अरे मेरे लैंग्वेज समझे क्या? जो घर आप खरीद के एग्जामिशन ले रहे भाई, वो आपका पहला घर या दूसरा घर हो सकता है, तीसरा नहीं बन सकता है. अगर वो तीसरा है मतलब आपका ऑलरेडी दो घर है. Guys, are we getting clarity on this point? And apart from this new property what you are buying or constructing, you should not buy any other property for next 2 years. You should not construct any other property for next 3 years. मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है, बॉस, if you want this exemption, point number 1, buy house property or construct a property, only one in India. You should not have more than one. So what you are buying can be your first or it can be your second. And moreover, for next 2 years, don't buy one more house. For next 3 years, don't construct one more house. You might ask, sir, इतना कंडीशन क्यों लगा है? अरे यार नेक्स्ट 3 को दूसरा खरीद लिया मतलब ये बड़ा तोप आदमी है यार, इसको क्यों देना है एग्जाम्शन? गवर्नमेंट लॉजिक समझ गया क्या? 54 में ऐसा कंडीशन है क्या? शिवा तेजा के पास 4 प्रॉपर्टी है. एग्जाम्पल, आई हैव गॉट 4 हाउसेस, आई सोल्ड 4th हाउस एंड आई परचेज वन मोर हाउस long term. Can I take 54 exemption? Yes. I have 3 houses with me. I sold a diamond necklace and I purchased 4th house. Can I take 54F? Condition is satisfied, but the last condition is gone. What is the last condition? You should not have more than one. हो गया ना यार दोस्तों? Clear, my dear friends? Everybody? Now I'll ask you one question. Think properly and tell me the answer. ठीक है? Vinod sir sold shares. What did he sell? And using that money, he purchased one residential house. And already he has got 4 houses. Can he take 54F exemption? Why? You should not have more than one. अरे यार बोलो यार. So speak out, my dear friends. Getting clarity or not? Everybody. पक्का क्लियर? Can I proceed? Sure? चलो, take it now. 54 and 54F. Very, very important sections. नहीं 54 के लिए नहीं है. 2 घर लेने के लिए एग्जामिशन, अगर एक ही घर ले रहे तो ठीक है, 2 घर को एग्जामिशन लेना है आपको, वैसा बेनिफिट एक ही बार मिलेगा लाइफ टाइम में. अंजलि जी समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन दोस्तों क्लियर है क्या? रिप्लाई दो एक बार. ऑनलाइन गाइस, एवरीबॉडी रिप्लाई. चिराग रिप्लाई कर भाई. बाकी लोग क्या कर रहे? रिप्लाई दो. राहुल, पुनीत, चिराग, आयुष, प्रवीण. उमेश, ओके उमेश, ओके डन, पक्का. ऑल क्लियर, गुड, डन. समझ में आ गया ना बेटा? सो इफ आई आस्क यू वन लाइन क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 54 एंड 54F, कैसा बोलेंगे आप? टाइम लिमिट्स आर सेम. एग्जाम्शन इधर तो जितना करेंगे उतना मिलेगा. 54F में क्या है? फॉर्मूला. और क्या डिफरेंस है? हियर यू शुड नॉट हैव मोर देन वन. उधर कितना भी कर रह सकते, और एक जो परचेस कर रहे एग्जाम्शन के लिए वो एक ही लेना चाहिए. इधर 2 भी चल सकता है अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर नहीं है तो, बट ये वन साइड लेफ्ट वाला बेनिफिट है. बराबर है बेटा एवरीबॉडी? और जो CGTS कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है ना अभी, वो दोनों सेक्शंस को भी एप्लीकेबल है. समझ में आ रहा है क्या? आपके पास 2 साल टाइम है, 3 साल टाइम है करके आप पैसे लेके जेब में रख के घूम नहीं सकते. आपको एग्जामिनेशन चाहिए भाई
तो प्लीज लेके आओ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में. Yes, on the capital gain deposit scheme, whatever money you put in, you will get the interest, and that interest is also taxable under income from other sources. Prajwal. What, Anjali? How is Prajwal? अच्छा, इन सबका भी क्लासमेट है. फिर सब लोग आपके ऊपर इशारा क्यों कर रहे हैं? सब आपके ऊपर इशारा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कुछ तो हुआ है. या वो बहुत सारे लोग आपके क्लासमेट्स हैं क्या, जो आप लोग के साथ थे बट आपके साथ पास नहीं हो पाए? क्या क्या पूछिए, क्या बोलिए, क्या बोले दिव्या? अच्छा, साक्षी को कोई नहीं मिला. अच्छा भाई, साहब बोल रहे क्या आप? मुझे लगा कोई नहीं मिला मतलब. हाँ, सब आते थे की तरह थोड़े रहेंगे. Online somebody is asking who is Prajwal. Prajwal is friend, good friend, nice friend, only friend. Huh? Who is jealous? Sakshi is jealous. Oh my God, this boy is over. Next 30 days full stars to the boy. क्या सर हो गया क्या? नेक्स्ट वाला लिखे, जब साइड हेडिंग लिखो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम कॉन्सेप्ट करके, फिर लिखो. सीधा ड्रॉ कर रहे बैठो मत. समझ में तो आना चाहिए ना आपको क्या लिख रहे हैं आप लोग. कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, सीजीडीएस कॉन्सेप्ट. हाँ जी, वेलकम जी. व्हाट सर? सर इज what is it? फेवरेटिज्म. हाँ, आई लाइक दैट वर्ड. हाँ जी, करेक्ट. बहुत मस्त लगता है सुनने में. आप मत बुलाओ. हाँ जी, डर लगता. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, बोलो मत. ठीक है, बोलो बेटा. अरे यार मजाक कर रहे, बोलो बेटा. चलो चलो चलो, बोलो. बाप रे. चलो एनीवेज, फन साइड. बोलो अंजलि, क्या डाउट है? अरे टू मच है यार, बोलो ना यार. रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर अगर इन्वेस्ट यूटिलाइज किए, इफ यू परचेज द प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टेड विद इन रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट, वेरी गुड. No need to put in CGDS. If you have not utilized that amount within due date of return of income, law is telling please put in CGDS. पूछो डाउट क्या है? ठीक है सर, रेंट के लिए कमर्शियल देने का लॉजिक नहीं बैठता है, बिकॉज द होल पॉइंट इज whether a property is residential or commercial is dependent based on how it is classified in municipal records. By seeing one building, you can't tell residential building, commercial building. It depends, no? Municipal record में कैसे classify करें? Because municipal tax is different for residential building, different for commercial building. It doesn't matter for what purpose you gave rent. It only matters whether it is a residential property or
commercial property. That is the criteria. समझ गया ना बेटा? Good. That example was targeted to me only, no? वो example मेरे को target करके पूछा ना आप? समझ गया? My practical example was that example. ठीक है? ये आयुष का ये क्या है सिंबल है? कुछ तो बोल रहा है. डेंजर टॉपिक चालू है. क्या डेंजर टॉपिक है रे? कुछ भी. सर डन हो गया क्या? जानवी डन. Done. So what is 54? Applicable to whom? ये मतलब ये कौन? MP, individual or HUF. What is sold? Long-term residential house. I have a question. Can a person claim 54 if he has short-term capital gain? 54F. Speak out. Definitely answer is no. सर समझ में आ रहा है क्या? यार बेटा प्लीज यार बोलो ना यार, जवाब दो बेटा. पक्का? चलो आई लास्ट वन क्वेश्चन. Expert sold a residential house property, correct no, for 3 crores. Selling price 3 crores. ठीक है? And the cost of acquisition on 10/10/2016 is 1 crore. They invested entire capital gains. Invested what beta? Entire capital gains in another residential house property. चलो बेटा, first of all, is this long term or short term? बोलो बेटा, long term. What is principal of consideration? 3 crores. Less expenses, nil. Net sale consideration 3 crores. Less index cost of acquisition. कितना है? 1 crore into 331 divided by, can you please tell अभी बोलना दोस्त. 16-17 का 16-17 260 कैसे रह सकता? 16-17 बोलना बेटा. 264 है क्या? श्योर? ठीक है, हो सकता है. बोलो फिगर कितना? $1 crore 25 lakhs, 30, 870 balance, 2 crores 74 lakhs. Okay, 1 crore 74 lakhs, 1 crore 74 lakhs, 62 121. This is what? Long-term capital gains less exemption under which section? 54, because we sold residential house, purchased residential house, but the answer is 0 because this is expert. Exemption is only for individual and HUF. Keep that point in mind. Clear, no? Please speak out. Everybody. Done. Next section 54 EC. ये भी खत्म करेंगे आज के दिन. ठीक है? सुनो. 54 EC is applicable to any assessee, any sold, wait, long term house or plot of land. Come, what did we sell, sir? Long term house or plot of land. And you made investment in bonds of NHAI, RECL.
NHAI, RECL, PFCL, IRFCL. क्या है फुल फॉर्म, क्या है इसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL. What is it? Pakistani force. Power Finance Corporation Limited, IRFCL. Indian Railways. क्या बोल रहे हैं? Correct answer only. Indian Railway Finance Corporation Limited. Good. What is the NHAI? National Highway Authority of India, RECL, Rural Electrification Corporation, PFCL, Power Finance Corporation Limited, then IRFCL. And these bonds should not be sold or offered as security within 5 years. 54 में याद है ना बेटा, 3 साल के अंदर बेचना नहीं चाहिए, पर इधर लॉक कितना है? लॉक इज 5 years. एंड एक स्पेशल पॉइंट है बेटा, एग्जाम्पशन इज amount invested or capital gain, whichever is lower, which is subject to maximum of 50 lakhs. I repeat again, which is subject to what beta? Maximum of 50 lakhs. याद है कुछ 50 lakhs वर्ड सुने? Friends, are we done? Can we proceed? Chalo guys, bolo. 54 EC is applicable to whom? Any associate. What is sold? Long-term house or plot of land. Investment is made in what? Bonds of what? NHAI, RECL, PFCL, IRFCL. कितना exemption? Amount invested or capital gain, whichever is lower. Maximum. That's it. ये तीनों sections सबको clear है? पक्का clear with the 3 sections? Now listen to me. Mrs. X कुछ तो किया A. What is it I'm writing? Sold a diamond. Spelling correct है ना? Diamond necklace for 2 crores. Sir, fair market value 2.3 crores. Sold for 2 crores, but the market value is 2.3 crores. ठीक है ना बेटा? Everybody, next. She purchased the same on 10/10/2019 for 1 crore. ठीक है ना बेटा? And sale date is 11/11/22. She purchased a residential house property for 30 lakhs on 3/3/23. Further, she sold such residential house property on 7/7/2024. 7/7/2024 for 40 lakhs.
determine tax implications for previous year 22-23 and previous year 24-25, if any. क्वेश्चन क्लियर है ना? यस, निकालो. डू इट गाइस. ऑनलाइन बच्चों खत्म करो फटाफट, क्विक. Two minutes time. Do it. Quick guys, get me the answer. Somebody is telling online exemption नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा भाई? अरे यार क्या हुआ यार, इतनी देर क्या यार? प्लीज. क्या बेटा? लास्ट 2 more minutes और नहीं.
यस आदित्य, आंसर क्या है? तो करना पहले फिर। कैन वी डिस्कस? उसके लिए रेडी है आप लोग? क्या है यार, क्या डेंजर क्वेश्चन है। चलो, प्रीवियस ईयर 22-23, फर्स्ट टेल मी गाइस, व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 2 crores लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना है? नील। व्हाट इज नेट सेल कंसिडरेशन? बराबर है ना बेटा? लेस लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? हाँ, क्यों शॉर्ट टर्म है? हाँ, ये परचेस कब किया? 10-10-19। सेल कब किया? 11-11-22। लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे बना यार? अरे क्या ब्रेन वो अपनी जगह पे ही है ना? सर आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम गिविंग सो मेनी क्वेश्चंस टुडे। इतना डिस्कस करे तो अपन एक स्टेज पे आते, सीधा करते गए तो क्या फायदा हुआ यार? शुड आई वेट फॉर 1 minute? आई वेट 1 minute.
चलो गाइस, व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्रिएशन बोलो. 1,14,53,480 287. ऑनलाइन तो सो रहे लोग, रिप्लाई नहीं कुछ नहीं, खाली बैठे हैं बस. व्हाट इज नॉट अ कैपिटल गेन? 85 lakhs. 71. Can we get exemption? Why? Because we satisfy condition of 54F. Correct, no? What is the exemption? 30 lakhs into 85 lakhs 46,713 divided by 2 crores. फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना? कितना है? सो माई एग्जामिशन विल बी ऑनलाइन. समझ में आ रहा है नहीं? रिप्लाई दो यार, ऑनलाइन में बैठे रिप्लाई तो दो कुछ. इतने लोग बैठे ऑनलाइन में, रिप्लाई नहीं कुछ नहीं यार. प्लीज रिप्लाई एवरीवन, कम ऑन. अंडरस्टूड और नॉट? कितना? 12 lakhs 007. व्हाट इज द बैलेंस? 7. This is my long term capital gains which is taxable. समझ में आ रहा क्या? Don't write from that. Listen here. This for which year? 22-23. And in previous year 24-25, what has happened, sir? We sold that property for 40 lakhs. What is the selling price? Cost or index cost? Cost. Why? Short term. Very good. What is the cost? 30 lakh plus 30 lakh minus, answer is 30 lakh. Short term capital gains 10 lakh. And you will also have long term capital gains of 12 lakh 82,007. The concept what you have to understand by this example is that in case of section 54, if the new property is sold within 3 years, whatever exemption is taken is reduced from cost. But in 54F, if the new property is sold within 3 years, whatever exemption you have taken will directly become taxable. फर्क समझ में आ रहा है क्या बेटा? 54 में क्या बोला उसने? कॉस्ट में से माइनस करो. 54F में क्या बोला? सीधा डायरेक्टली टैक्स करो. स्टूडेंट बोल रहा है क्या फर्क पड़ेगा सर, ऐसा भी तो टैक्स, ऐसे भी तो टैक्स. अरे माय डियर फ्रेंड, 54F में देखो आप, वो लॉन्ग टर्म बन गया. अगर कॉस्ट में से माइनस कर तो क्या होता था? शॉर्ट टर्म होता था. तो टैक्स रेट में फर्क पड़ता था ना बेटा. सो डोंट टेल क्या फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ेगा यार. आई टेल मी वन थिंग, आर यू एंजॉयिंग द क्वेश्चंस? या मैं सीधा अपना 50B 50C पढ़ा के खत्म कर दूं? 45 1A 2 3 4 5 खत्म हो जाता मेरा काम. आज खत्म कर सकता कैपिटल गेन में एक्चुअली, चाहो तो कर दूं क्या? क्लोज कर देंगे तो प्लीज कम ऑन. एनीबॉडी डन द आंसर करेक्टली? कौन किए? 70 to 64 बराबर किया क्या? वो बराबर किए. गुड, उतना तक किए. गुड, आई एम हैप्पी. ये तो अब समझ में आ गया ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना है. 54 में क्या है कॉन्सेप्ट बेटा? इफ द न्यू प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन 3 years, एग्जामिशन टेकन क्या करेंगे? रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट. क्लियर है ना बेटा? कैन वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी रेडी? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे यार. 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते यार, मजा आता, तभी क्लैरिटी आएगा ना यार. चलो. मिस्टर वाई sold 3,000 shares sold what beta? Of ABC Private Limited on 10/10/22 at 1,000 per share. ये कितना हुआ? 30 लाख. करेक्ट नो? अच्छा, बाय द वे पिछला क्वेश्चन में
ये मार्केट वैल्यू को क्या करें आप, 2.3 करोड़ इग्नोर करें ना, क्यों? ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी है कब लेने के लिए, 10% बोल रहा है ये बड़ा आदमी, आया बड़ा। अरे यार 10% इज ओनली फॉर दैट लैंड एंड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, नो? इधर 10% लॉजिक क्यों आता है यार? Somebody is telling, sir, you already told, no, if selling price is not determinable, fair market value is deemed to be selling price. That will come only when selling price is not determinable, no? This is determined, no? Some are telling, sir, you already told, no, selling price less than market value is deemed to be selling price. That is only for unquoted shares. This is a diamond necklace. Continue. Listen. Brokerage paid at 2% of selling price. He acquired shares in the following manner. He acquired shares in what, beta? Following manner. Number 1, 1,000 shares purchased on 1/6/1999 at 200 per share. Fair market value on 1/4/21 300 per share. Fair market value on 31st Jan 2018 700 per share. Thousand shares bonus allotted on 15/10/2010. Balance 1,000 shares purchased on 7/7/2017 at 600 per share. क्लियर है ना बेटा दोस्तों? एवरीबॉडी, मिस्टर वाई deposited 5 lakhs in capital gain deposit scheme account in order to utilize for purchase of residential house property. Correct, my dear friends? And this deposit, what we have done, is within ROI due date. समझ में आ रहा ना बेटा क्वेश्चन दोस्तों? वंडरफुल. Determine capital gains and also tax. Assuming Y has salary income also, which is computed, which is what beta? Computed, which is 48 lakhs. Solved. Do it. Go on. क्या बेटा? How much time you want? 5 minutes, sir. नहीं यार, चाहिए मुझे. करो. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट है. करो. स्टूडेंट इज आस्किंग, सर आप टैक्स पूछे, वाई का एज नहीं बोले. ठीक है यार, वाई इज अ रेजिडेंट, एज इज 31 years.
आदित्य इज टेलिंग सर ये क्या है सर, ये सब कुछ भी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, सब। और क्या पूछ रहा है उमेश भाई, क्या चाहिए तेरे को? इंडेक्स नंबर्स चाहिए। दोस्त एक बार थोड़ा इंडेक्स नंबर बताना मेरे भाई, किसका चाहिए? 21 22 का बोल एक बार। नहीं नहीं, 21 22 नहीं चाहिए, 2001 2 का बता। 100। 17 18 का बता। 272। 18 19 कितना है? 280। 10 11 का कितना है? 17 18 का कितना है? 272। 22 23 का 331। और कुछ चाहिए क्या उमेश? बस है क्या? खुश? सॉल्व कर अभी, आंसर कर दे बेटा, देख। कम ऑन अभी, चिराग निकाल करेक्ट आंसर। यस, नवनाथ यादव, कैसे ने? नवनाथ पापा का नाम है क्या? ओ आई एम सो सॉरी यार। ध्यानराज, करेक्ट, यू आर राइट, आई एम सो सॉरी। ध्यानराज जवाब दो बेटा। वैष्णवी, आंसर कमान। क्या? अरे मैं नाम, आंसर ही तो पूछा ना मैंने, क्या कुछ बोला यार, सीधा पापा को बोल रहे। अरे अंजलि, अगर करेक्ट आंसर दिया ना तो वो टॉपिक छोड़ देंगे। ओ हाँ जी, बोलो आंसर। हाँ जी, स्वीट प्रोवाइडेड, आंसर्स आर करेक्ट। वंडरफुल, स्टूडेंट्स आर टेलिंग। सर 2 मिनट आप शांत रखो, हम आंसर बोलेंगे। आई एम टेलिंग, एंजॉय।
गुड, ऑनलाइन में ऑलरेडी आंसर आ गया, फैंटास्टिक, कितना फास्ट है ऑनलाइन वाले, बट सही है नहीं वो अलग बात है, आंसर तो आ गया. द मोमेंट आई टोल्ड सही है नहीं मालूम, रिप्लाई आ गया, आई थिंक इट इज करेक्ट. कैन वी प्रोसीड दोस्तों? शैल वी स्टार्ट? Good. Multiple answers are coming online. Slowly answers are changing. चलो, can we discuss बेटा? बताओ मुझे बेटा. What do we start with? Full value of consideration. What is the figure? Huh? Full value of consideration is 30 lakh. Less. What is the expense on transfer? 2% कितना है? 60,000. How much is my net sale consideration? 29 लाख 40,000. सबसे पहले बेटा वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? हाँ, लॉन्ग टर्म, सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म है, वो तो क्लियर है ना बेटा? All the shares are long term, and if you observe carefully, all the shares given in the question are long term. 1,000 shares are purchased when? Come on, reply quick. 1/6/1999. तो क्या करेंगे आप? We will take market value as of 1/4/2001. 31st Jan 2018. Whatever I gave in the question is absolutely irrelevant. That is relevant only in case of listed securities, listed shares. करेक्ट है ना बेटा? 112A के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना? इस क्वेश्चन में अनलिस्टेड है या लिस्टेड है? If it's unlisted shares, will 112A come into picture? If 112A does not come into picture, 31st Jan 2018 is irrelevant. क्या सर समझ में आ रहा है क्या? In 112A only, I told the concept that 31st Jan 2018 story will come into picture only in 112A. But we are not dealing with 112A. 112A will come only in case of what? Listed shares. समझ में आया क्या बेटा? So 31st Jan 2018, whatever I gave in the question is absolutely irrelevant. Guys, yes or no? Please reply बेटा. चलो, what is the index cost of acquisition? पहले कितने शेयर है? एक एक शेयर्स का अलग अलग लेना है ना? 1000 इसका क्या सीन है? 1000 into 300 into 331 divided by 100. 9,93,000. बराबर है ना बेटा? नेक्स्ट
बाकी 1000 शेयर्स, ये तो बोनस शेयर्स है, इसका कॉस्ट तो नील है. बट व्हाट इफ बोनस शेयर्स allotted before 1/4/2001? Then we'll take mark even 1/4/2001. Correct, my dear friends? The story of 31st Jan 2018 will come only in case of listed. If it is not listed, 31st Jan 18 story will not come at all. यार दोस्तों बोलो यार. Next, your brain is eating, no? उसके लिए हाँ, क्या हुआ भाई? That is coffee, not tea. वो साइड टी है, ये साइड कॉफी है. One side is rule 7B, one side is rule 8. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू, थैंक्स काका. ठीक है, गेट बैक. चल मैं गैस बालास 1000 शेयर्स का क्या सीन है? 1000 इंटू 600 इंटू 331 डिवाइडेड बाई 272 कितना है? 7 lakhs 140. अरे सब बराबर गिरे ना आप लोग, तो फिर क्यों इतना रो रहे थे तब से? मुझे लगा आपका ब्रेन हीट हो गया, उसके लिए मैं जाके बोला कॉफी लेके आओ. अच्छा कॉफी है इसलिए आंसर आया. अरे दैट वाज अ स्कीम. चलो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 12 lakh 853 लेस एग्जम्पशन अंडर विच सेक्शन बेटा? 54F. आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? बिकॉज डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, वो भी तो कंसिडर करेंगे ना, कितना डिपॉजिट किया. बट आई कांट टेक 5 lakhs. 5 lakhs into 12,16,853 divided by 29 lakhs 40,000. Some great students first they multiply and tell sir calculator is not working. डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते, पता है क्या आपको? लाइफ में ऑप्शन है. कितना है बेटा? 2,06,940. That's it. ये करे आप लोग, सही करे. Who has done exemption correctly? Good. What is the taxable LTCG? 10,09,905. Now tell me guys. Chalo, what is the salary income? Salary income is 48 lakh. A. हो गया. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10 lakhs 9,905. टोटल 58 lakhs 9,910. राउंडेड ऑफ एज पर सेक्शन 288 ए. चलो हाउ डू वी कैलकुलेट टैक्स ऑन 10 lakhs 9,000? अच्छा 900 करना था ना? नहीं 910 ही करते. सही किया मैंने. 10,09,910 उसको राउंड ऑफ कर अज्यूम करो यार, तो 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है, पे कर दो, रो मत उतना. ठीक है ना? इंटू व्हाट परसेंट? 20%. अंडर विच सेक्शन? 112. अरे यार बोलो ना यार, कितना है? 2,01,982 on 48 lakhs. स्लैब रेट्स बराबर है ना? उमेश चेक योर आंसर बेटा, गलत है तुम्हारा आंसर. नित्या गुड. या कितना? 40 लाख स्लैब रेट. 1252 500. टोटल 14 lakhs 54,482 482 प्लस
HEC, nonsense. Surcharge at the rate of 10%. 1,45,448. Surcharge आएगा ना बेटा? क्यों आया surcharge? Total income is more than 50 lakhs. सर क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट है. कितने टोटल? 15,99,930. HEC at 4%. 99. Total 16 lakhs. 930. Rounded off as per section 288B. Are we clear with this, everybody? Speak out. That's it. That's the end of story of this beautiful, brilliant question. Cheers. डन. क्या हुआ दोस्त? हाँ 10% तो लिया ना. अरे 25 आया तो 15 करूंगा ना मैं. अरे 25 आया तो 15 करूँ, 30 आया तो 15 करूँ, 10 आया तो 15 क्यों करूँ भाई? अरे यार इनकम करेक्ट क्या? कैपिटल गेन्स. ठीक है, लिखना है क्या? लिख लो. आई एम श्योर द क्वेश्चन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस. अंजलि, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना? बस जिसको आंसर गलत है क्वेश्चन आ गया. स्टेप वाइज मार्किंग रहती है ना सर एग्जाम में. आपको वो डाउट आएगा? नहीं रहेगा ना बेटा, ऑलरेडी बताया ना आपको. स्टेप वाइज मार्किंग इज ऑलवेज देयर. मस्त है यार कॉफी, एकदम फुल स्ट्रॉन्ग बना है. बहुत स्ट्रॉन्ग बना है. मजा है यार आज सच में, इतने क्वेश्चन डिस्कस करें. चलो गुड. सर भी क्लियर? सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा ना बेटा? एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स. चलो लेट्स गेट बैक. व्हाट इज सेक्शन 54 applicable to individual and HUF? What is sold? Long term residential house. What is purchased? Long term residential house. Correct. Very good. Sold long term, purchased also long term. मतलब आपको खरीदने के लिए 3 साल लग गए, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? अरे क्या लॉगिंग पीरियड है? सोल्ड लॉन्ग टर्म, परचेज लॉन्ग रेजिडेंशियल. परचेज में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या रहता है यार? अजीब क्वेश्चन पूछते हैं. क्या हो गया आपको? सुबह क्या करे, किससे मिल के आए, ऐसा दिमाग चल रहा है आपका? सब क्लियर? अभी रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. रेडी? मिस्टर प्रज्वल. मिस्टर प्रज्वल, अच्छा है नाम आदित्य. अपने को पसंद आए तो नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता. Mr. Prajwal sold a house property. Mr. Prajwal sold a house property on 30th March 2023. He sold a house property on 30th March 2023 for 2.2 crores. 2.2 crores. Bracket. Stamp duty value 2 crores. ठीक है ना बेटा? फुल स्टॉप. He acquired the property. He acquired the property on 10/10/2010. On 10/10/2010 for 50 lakhs. 50 lakhs. Full stop. He incurred improvement cost.
he incurred improvement cost. He incurred improvement cost of 10 lakhs on 8/8/2016. On 8/8/2016. Full stop. He purchased an open land. He purchased an open land on 31st March 23. On 31st March 23 for 20 lakhs. Full stop. He also purchased bonds of NHAI for 60 lakhs. On 10/10/23. On 10/10/23. फुल स्टॉप. क्या नाम दिया मैंने? प्रज्वल. हाँ. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. Due date of return of income for Mr. Prajwal is 31st October 23. Due date for return of income is 31st October 23. Full stop. Determine the amount of capital gains. Determine the amount of capital gains chargeable to tax. Determine the amount of capital gains chargeable to tax. Calculate, guys. I don't know. बोला ना ऑलरेडी? नहीं बोला क्या? ठीक है. The 54 EC bonds of NHRSL we have to buy within 6 months. That's a mandatory rule. 54 EC bonds you have to buy within 6 months. ये वापस इंडेक्स नंबर्स पूछ रहे हैं यार ये लोग. दोस्त इंडेक्स नंबर्स बोलना. गूगल में सर्च कर.
टू मच मत कर. That is all तोड़ मालिक. हो गया. यस चिराग, क्या है आंसर? प्रवीण मोटेगांवकर, क्या भाई गायब हो गया क्या पूरा? ऑनलाइन है पर रिप्लाई नहीं है, जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहा है भाई? हो गया क्या? अब तेरे से पूछा ही नहीं. नहीं, मैं से बात कर रहा था. कंट्रोल. प्रवीण बोल रहा है कुछ नहीं सर. अरे कुछ नहीं है तो आंसर तो बोलना भाई. Who is it? Disturbance. हाँ जी. गुड. ऑनलाइन में कुछ आंसर आया. दोस्त तेरा क्या आंसर है? ₹10 लाख. ऑनलाइन में तो आंसर 88 लाख कुछ आंसर आया. 95 लाख कुछ आंसर दे रहे. 8836. सर ये बोल रहा है सर वो 6 मंथ्स के बाद लिया है ना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को, आंसर बोल रहा है भाई. आंसर बोल रहा तो ठीक है, गुड. क्वेश्चन पूछ रहा तो पूछ मत, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है उसमें 6 मंथ्स का ही है. चलो बोलो भाई. हेलो यो गाइस, व्हाट फुल ऑफ कंसीडरेशन? 2 crores 20 lakhs. क्यों? सरप्राइज. क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए. I clearly told selling price is 2.2 crores. Stamp duty value is 2 crores. Clearly लिखा है ना में. तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो वही लेंगे क्या? कम वाला लेते क्या? उसने बोला 10% क्रॉस नहीं हुआ ना. अरे मेरे बॉय 10% कहाँ नहीं, वेलकम ओनली व्हेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर. नो, तो तेरा प्रॉब्लम है वो. मैं क्लियरली लिखा है क्वेश्चन, सोच समझ के क्वेश्चन बोला मैंने. लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है बेटा? नील. नेट सेल कंसिडरेशन 2 crores 20 lakhs लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन कितना है? 50 lakhs इंटू 331 डिवाइडेड बाई 160. ये बेचा क्या एक्चुअली? लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बराबर ना? सोल्ड ये है, उसमें कोई डाउट नहीं है. चलो कितना है? 99,10,180. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 331 by 264.
10 lakhs 12,53,788. What is my long term capital gain? 03 less exemption under 54 F nil, 54 nil, 54 EC nil. क्यों nil nil भाई? What we purchased? Land. When we purchase one open land, 54F cannot come, 54 can come. ये दोनों में से कुछ भी आना मतलब भाई purchase should be residential house and sold should be other than residential for 54F. एक बात बोलो मुझे, 54F दोनों एक साथ आ सकता है क्या? 54 EC आ सकता है. For example, I sold one property, I mean long term residential house, and I got capital gain of 70 lakh. मैंने नया प्रॉपर्टी 50 लाख का ही लिया, बाकी 20 लाख मैंने बॉन्ड्स खरीद लिया, तो 54 EC दोनों हो सकता है ना. 54 EC भी दोनों हो सकता है, बट 54 दोनों साथ में नहीं आ सकते. कैसे आएगा भाई? 54F में अदर देन हाउस है, 54 में हाउस है. 54 EC नील क्यों है इधर? मोर देन 6 months. 1,08,36,032. That's it. और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. बट सर ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि बॉस इसका टाइम लिमिट कैसे नहीं आया, उसका इसलिए नहीं आया बिकॉज व्हाट वी परचेज्ड इज लैंड. दैट क्लैरिटी शुड बी देयर. इफ दैट इज क्लियर, वी आर ऑन ट्रैक. समझ में आ रहा ना बेटा? जा, आई नॉट क्लोज द क्लास, गिव मी सम टाइम. 5 मिनट दो. सर ये पॉइंट देखो ना बेटा. सर प्लीज स्टॉप टॉकिंग. 11th क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स विच आई डिड नॉट टीच यू सो फार. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लोज कर दूंगा इसको. नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट कैपिटल गेन्स. सी नाउ, ऑन March 1st he transferred 900 equity shares in A Limited unlisted for what value? And Suresh does not own any residential property. These shares are purchased on 2nd April 2015. मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म. दोस्तों फॉर व्हाट वैल्यू परचेस्ड? चलो निकालो. 23,50,000 तो सेल कंसिडरेशन है यार. FEC is what? Then expenses तो नीले. इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन कितना है? 2 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 254. दिया ना क्वेश्चन में ही यार. कितना है? 2,60,000. ठीक है, जो भी है कुछ फिगर आए ना यार. बेटा बोलो ना यार. टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर डिफरेंट सेक्शंस ही मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स. ये सेल क्या किया? सेल क्या किया? शेयर्स. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट कोलकाता for 19 lakhs, out of which stamp duty expenditure is 30,000. वो भी कंसिडर करेंगे. So what is this then? 54F. Sold any long term other than house property. Investment is made in house property. Formula ले लो, exemption निकालो. NHAI bonds 54 EC. कुछ भी नहीं ना यार क्वेश्चन ये. अरे फर्स्ट में दिया ना यार. ये ट्रांसफर 1 मार्च को हो गया ना. अरे अप्रैल में तो 2 महीने तो बात है ना यार. समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल गेन इज अ वेरी स्कोरिंग एंड एवरी टाइम क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जाम फॉर 4 to 6 मार्क्स. ये आपका RTP है, शायद आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना बेटा? ये ब्लॉक वाला बाद में देखते हैं. ये नहीं पढ़ा है ना अभी तक, मतलब रेगुलर में हो गया, इधर पढ़ेंगे बाद में देखेंगे. ये देखो 23 लाख, ये तो वर्किंग आप कर लिए. स्पीक आउट. बट 54 EC क्या है बेटा? 0. क्यों? 54 EC में applicable to any SSE, but what is sold should be a house or plot of land. चेक करो नोट्स में लिखे अपन अभी. करेक्ट है ना बेटा? बट हियर व्हाट इज सोल्ड? शेयर्स. बट 54F तो आएगा ना.
एफ तो फार्मूला लगाए, एग्जामिशन ले लिए, खत्म कहानी। तो ये क्वेश्चन में एक ही की पॉइंट है, 54 EC नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज व्हाट इज सोल्ड इज शेयर्स। EC तभी आएगा ओनली व्हेन सोल्ड इज हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड। आर वी गेटिंग क्लैरिटी? पक्का सबको समझ में आ रहा ना बेटा? यार दोस्तों, are we clear totally so far? 100% my dear friends? Done. We'll call it off. Balance we'll take for next class. ठीक है? Thank you so much guys. Take care. See you all in next class.